If you're tired of all the commercial places and looking for a beautiful village which appears lost in time, little or no cell phone coverage, no ATMs, no markets, only a couple of shops selling basic necessities and a few locals wandering around carrying dry twigs or strolling with the cattle of a handful of sheep and goats, then let's explore this beautiful nomadic village of Himachal Pradesh, Rakchham, in this video. This is Rakesh Jain and welcome to my channel Wanderer. Once we reached Rakchham and after a hot cup of tea in this cold weather, we were ready to wander further. They say, right, there is a solace in the nature walks. Mr. Avinash Negi was kind enough to take us around the village. For some reason, I enjoyed this constant greeting and Mr. Negi speaking to every person he met on the road, even if it just meant saying hello to them. We often miss this in our city lives where we want to see only our mobile screens. At first, Rakchham seems like a village lost in time, barely any cell phone coverage, no ATMs, no markets, only a couple of shops selling basic necessities and few locals wandering around carrying dry twigs or strolling with their cattle of a handful of sheep and goats. For some reason, Mr. Negi was very eager to introduce his father to me. Mr. Negi's father. He runs this grocery store here. Dhanyawad, Uncle Ji. We continued our journey further to the village. During this conversation, I also understood the meaning of the word Rakchham. Rakchham is a Sanskrit word and the first part of the word Rak means rock and Sham means bridge. Earlier there used to be many bridges made from stones and hence this village derives its name from there. Once we entered the gate, the view of the village was looking so beautiful in this evening hour. See the beautiful mountains at the back. On my sides, these beautiful wooden houses. Everything seems to be coming from some canvas picture to me. As per Mr. Negi, there are two religions being followed in this village, Buddhism and Hinduism. Sign of Buddhism. And this is the sign of Buddhism. कुछ भी चूहा तक भी नहीं घुस पाती इसके अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल हो गया हमारा कि कुछ इतना सा छेद भी नहीं होता इसका। अच्छा, पूरा हमारा अनाज हुआ कुछ भी होगा, सर्दी गर्मी 12 महीने के लिए इसमें रखते हैं। अच्छा, तो 12 महीने तक अनाज इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का हमारा एक पहले, अब तो ठीक है रोड हर दूसरे तीसरे दिन खुल जाता है। पहले हमारा था कि महीना भर खुलता नहीं था, फिर खाने के लिए स्टोर करते थे, तभी इससे हमारा पूरा की सर्दी का पूरा स्टोर होता था विंटर। अच्छा, ओके। So these are the storehouses and the only reason for that is, earlier when the snow used to cover the roads, it never used to open up at least for a month. But now because of the connectivity is well established, the roads open up every third day. Otherwise, these storehouses were meant to preserve the food grains for at least a year. As you can see, there are many such storehouses in the village. Since winter sets in from mid-November and it's pretty severe with snowfall ranging from 3 to 9 feet of snow during the winter. Most of the village nomads migrate to lower levels and only return back to their village towards the end of winter in March. ये ऊपर ये स्टोर होता है हमारा अनाज के लिए और नीचे जो हमारा पशु के लिए होता है। Okay.
So these are the storehouses where you preserve the food grains on the top, but at the same time, even for the animals, the fodder is stored here. ये क्या है ये? ये हमारे बौद्धिज्म के मंदिर है. So this is the Buddhist temple here. अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमारे को? ये हमारे भोलेनाथ के मंदिर जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है वो निकले है कि अखरोट वॉलनट के पेड़ के अंदर से पेड़ काटते काटते कट ही नहीं रहा होना उससे, फिर हथियार वगैरह खराब हो रहे थे उनके, फिर वो साइड में बैठ गए परेशान होके कि क्या करते क्या हो रहा है. उतने पेड़ खुद ही टूटने लग गया था और उसके अंदर से जो भोलेनाथ का है ना कुछ एक अंश निकल गया, एक प्रकार का एक प्राकृतिक रूप से. फिर वही उसके बाद की उनको वहाँ से लाके तब यहाँ पे विराजमान कर दिया. हर मंडे को कोई अपनी इच्छा से भोलेनाथ के वही पूजा करते हैं, जैसे हलवा जो होता है प्रसाद वो बनाते हैं हर मंडे. जो आपको बुद्धिज्म मंदिर बनाओ चाहे हिंदुज्म मंदिर कुछ भी, ये हमारा बनता वुडन ही है. वुडन की वजह से तब आपको लग रहा हो ना कि बुद्धिज्म का वुडन का बनता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये हमारा बस जितने मंदिर होगा या मकान जो भी होगा ये हमारा लकड़ के ही बनते हैं. ओके, लकड़. 17 नवंबर 2002 पूरा गाँव जल गया था, उसके बाद बनाया ये जितने मकान बने हैं. नहीं तो उससे पहले पूरा हमारा लकड़ के मकान थे कि और इतने क्लोज थे ना मकान भी कि एक के छत से कूद के हम दूसरे के छत भी नहीं जा सकते थे ऐसा. फिर उस आग में ये मंदिर बचा हुआ या कैसा? ये मंदिर बच गया. ये मंदिर भी जलने वाला ही था, तब उसने भोलेनाथ को बाहर निकाले थे और जैसे भोलेनाथ बाहर निकले अपने दरवाजे का पूरा आग चल गया. So this is the temple deity here, the Bholenath statue. This is the Bholenath statue in its natural form when they were cutting the walnut tree. Now we head back to witness a procession taking place where the entire village assembles. That's the entry of the local deity's temple. Tourists are not allowed inside. The locals and the tourists have assembled here to watch this procession. People are assembling and the band has already assembled. The procession should start any moment now. We are given an indication to stop filming now.
Once the signal was given us to proceed filming, this is the conclusion of the procession. It was quite a different experience for me as I've never witnessed such a procession in my life. Elders of the village here, being here and experiencing this culture is altogether a different experience, which I'm sure no amount of vlogging or any amount of writing can give you that. Sometimes just take some time out of your busy schedule and spend a day here at Rakchham. And I really like this place. Also, kind of a mixed culture of both Buddhism as well as Hinduism. We head back now. Right behind me is the Soshla Peak, and when I was talking to the locals here, I realized an interesting fact about it. And let's hear from Mr. Rajesh Kumar Negi. इस पीक को अभी तक किसने दो ग्रुप ने क्लाइम किया है। पहले आज से 4-5 साल पहले एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, तो फॉरेन पीपल्स ने उसको क्लाइम किया था। मिस्टर बनार्ड एंड उनकी टीम थी। और सेकंड हमारी इंडिया की, ये महाराष्ट्र के पुणे के लड़के थे, हो सकता है मिक्सअप हो, साउथ इंडियन भी हो, तो उन्होंने लास्ट ईयर इसको क्लाइम किया। तो इन्हें सिर्फ अभी तक 2 ही ग्रुप है जिसे इसको क्लाइम कर सके। जी। ओके। और भैया जी, आप कुछ और भी बता रहे थे यहाँ पे कि भोलेनाथ का चेहरा जैसे है। हाँ, इसको अगर ध्यान से देखें और इसको इमेजिन करें तो इसको जो साइड पोजीशन है वो बिल्कुल शेप जो है भोलेनाथ का दिखता है इसमें। और वो शेप सामने ही, ये जो किन्नर कैलाश है, तो उनको सामने देखते हुए ही वो कैलाश, भोलेनाथ जी सामने किन्नर कैलाश को देख रहे हैं। इस तरह से उनकी एक मूर्त यहाँ पे दिखती है, तो वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कि ये ऐसा है। तो वो इस तरह से, हाँ, कोई स्टोरी है नहीं है इसकी, कोई ऐसा पुरानी कोई स्टोरी है नहीं है इसकी, मतलब अगर है कि इसको इमेजिन करो तो आप मानो तो सच है, मानो तो सच है, ना मानो तो सब झूठ है। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप ये जानकारी शेयर करने के लिए, और थैंक यू। थैंक यू। और अच्छा, और On the way back, we couldn't stop ourselves from spending time with these children. They were so sweet. Also time for us to head back to our accommodation, which was Rustic Paradise. All the details about the stay, please click on the link above or check the description box. We were just enjoying the bonfire, and then when I was talking to Mr. Avinash Negi, he was also saying that he also organizes a lot of treks. So let me hear from him on this. डे ट्रैक भी कराते हम, फिर ये 2 डे 2 नाइट भी हुआ, फिर 3 नाइट 4 नाइट या हफ्ते तक इससे ज़्यादा ट्रैक होता है। फिर हम लोग अच्छे से, जैसे हमारा 7 दिन का ट्रैक हो, 7 नाइट्स के, फिर ये हमें पोटरे होते हैं, पोटरे हम पूरा सामान वगैरह तो छोड़ आप के जाते हैं। स्कीइंग वगैरह कभी स्कीइंग के, हाँ, उस स्कीइंग और नॉर्मल ट्रैक जो भी है, दोनों आप मौसम में विंटर में, हाँ, विंटर में स्कीइंग भी करा लेते हैं। ये वॉकिंग करके जाना पड़ता है। ऑल ओवर जो इंडिया में है, 2 ही विलेज को जाना जाता है वैली ऑफ फ्लावर के नाम से। अच्छा। एक उत्तराखंड में है और हिमाचल में जो है ये रक्षम गांव में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। You can get in touch with Mr. Avinash Negi for all the trek details. I will share the contact details in the description box. I hope you enjoyed this journey with me, and tomorrow we will go to a new destination. So stay tuned with us. Thank you. Rakesh Jain signing off.